एंड व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, राइट? हमने वो ट्रेड्स पढ़े थे मोनो हाइब्रिड के अंदर, टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट, वी रिमेंबर दैट, Yes, sir. रेड, Yes, येलो, sir. Yes, sir. रिंकल्ड, राइट, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राइट? हमने ऐसे किए Brown. थे, राइट? किस तरह से ये ट्रेड्स होते, ये रीजन क्या है, राइट? सो बेसिक रीजन इज the characteristics or these traits which we are talking about of parents are transmitted to the progeny. To progeny means, we know that progeny means क्या होता है, offsprings, right? Through genes they are basically characteristics are transmitted. तो मैं इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं, characteristics are transmitted to progeny. But present नहीं होती. ठीक है, थ्रू ठीक है, टू प्रोगेनी थ्रू जीन्स, थ्रू genes. Now thing is that, sir, where does the genes are located? Through genes which are present in, through genes present in the, हम ये कर लेंगे, in their chromosomes, present in their chromosomes during the process of, और ये ट्रांसफर कब होते हैं? हमने बताया कि जीन्स ट्रांसफर होते हैं टू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, okay, now the thing is that how many genes are present in their parents? In each parents, we know that there are two parents which are involved in it. P1, which is we are considering it male. P2, which is we are considering it female. They have two genes. They have two genes, and these two have two genes. याद रखना, genes always work in pair. Genes always Work in pair. now what happened, इनका एक genes will come there, one gene will transfer, and one gene from this parent will transfer. Out of these two, one gene will be transferred there, and new, this is progeny, and one genes of the parent, and one P1, and one genes of the parent which is the female, right? A new gene is being derived. Out of this, दोनों के अंदर एक एक जीन, दोनों के जीन्स आ गए. Out of this, which one is dominant? That effect it is going to show it, right? You got it? The parents have the two genes. Then where Yes, does sir. that one genes go? The two genes got, what happened? There is a cell division happens here. These two genes divided into, one gene is transferred into this cell and another gene is transferred into another cell. But one gene is diffused during the process of reproduction and only one gene survived basically. Is it okay now? So basically genes works in pair. There is a pair of each genes of each characteristics of an organism. This is an important point. See what I said. There is a pair of genes. अभी हमने बताया there is a pair of genes present in, तो हम इससे बेटर लिखते हैं there is pair of genes of each characteristics, of each characteristic. What does it mean? See, height का जीन्स अलग होगा, हेयर कलर्स का जीन्स अलग होगा, राइट? गेटिंग इट? आपके कॉम्प्लेक्शन का जीन्स अलग होगा, आपके नोज की शेप का जीन्स अलग होगा, आपके
eyes की shape का genes, they different kinds of genes. Even how you behave, that also there are also genes regarding that how your body is going to work. So what we can say, there is a pair of genes, and ये नहीं सबके single, there is a pair of genes. जो pair होंगे, जो पेरेंट्स के अंदर दो जीन्स थे, इसके अंदर ये दोनों जीन्स एक ही कैरेक्टरिस्टिक के हैं. इट कुड, अगर हम इसका हाइट का लेते हैं, सपोज करो हम हेयर्स का लेते हैं, ईदर द हेयर्स आर ब्लैक और ब्राउन. सो जो एक जीन्स बनेगा, ये नहीं होगा कि पेरेंट्स का ब्लैक हेयर का आ गया और दूसरे पेरेंट का हाइट का आ गया. इट इज नॉट पॉसिबल. व्हेन द genes are formed in the chromosomes are donated, both pairs of each characteristics combined. That point should be noted. हम ये नहीं कर सकते सर दोनों के अंदर एक एक डोमिनेंट लेके दो डोमिनेंट वाला बन गया, ब्लैक हेयर भी हो गए और लंबे घने बाल भी हो गए. नहीं हो सकता. ब्लैक हेयर हो, ये ब्लैक हेयर्स के होंगे. अगर ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे या गंजा वाले जीन्स होंगे, वो अलग होंगे. अब जीन्स वर्क कैसे करते हैं, अभी हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ. बेसिक सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज अ पेयर ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इन व्हाट यू कॉल्ड इन अ जीन्स, एंड ईच पेरेंट ट्रांसफर ओनली वन जीन्स आउट ऑफ देयर टू जीन्स of a one characteristic, and both genes of both the parents, one genes of both the pairs combine to form a pair of genes, and whichever is dominant, it shows the characteristics of that genes. This one is clear? Is it Yes, clear? sir. Yes. Yes, sir. Okay. ओके. जीन्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, हम ना थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ. ठीक है. देयर कुड बी जीन्स. अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि हाउ डज द जीन्स वर्क. जीन्स क्या कैसे वर्क करता है, राइट? ये क्या करता है एक्चुअली. जीन्स आर द पार्ट ऑफ ए डीएनए, राइट? और जीन्स कंटेन्स द डीएनए. मैं इसको थोड़ा सा एक बार रीड करके फिर हम डिस्कस करते हैं. ओके. द टू जीन्स, Genes cannot, the traits cannot be mix of both the father and mother. It will be only one, either of father or it will be only they exist in independent in nature, and they will show their own traits. They cannot intermix with each other. Is it okay with everyone? I hope. Sia, is it clear to you, beta? Yes, sir. Okay, now we are talking about how does genes, I was talking about how does the genes work. ये जीन्स काम क्या करता है, हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि डोमिनेंट हेयर है या हाइट लंबी है, हाइट छोटी करनी है, हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा, राइट? बेसिकली जीन्स क्या है, अ सेक्शन ऑफ अ डीएनए. जीन्स इज अ section of DNA written right on a chromosome, right? सबसे पहला क्या है, genes is a smaller part and it is a part of a DNA which is present in the chromosomes. What is the genes, right? Basically genes controls the formations of proteins, controls the Formation of protein. formation of, there are 100,000 types of proteins in our body. Formation of proteins which controls ध्यान दें. फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोल, मैं थोड़ा और बेटर लिख दूँ, चाहे आप इसको लिख भी सकते हैं. which control a specific characteristic, which control a specific characteristic of an organism. Is what does it mean? It means that suppose there are two genes in an offspring, right? This is dominant. These genes will send the instruction to the hormones. These genes will send the instruction to the hormones to make a protein of height, to make more protein of height. It will instruct the
hormones to make more proteins which are responsible for Height. height. So that proteins start building up. As these start building up, height keep on increasing. Now in case there is T and T, here it is a small height is dominant, then what will happen? Here in this small t, in case if this is dominant, it will not send the instructions to the hormones to make a protein. It will not send. So instruction will not be sent to the organism, or what you call hormones. Hormones cannot do their work itself until unless genes direct them to do something. So they are not going to make any proteins for the height, and the height of an organism will not increase. This concept is little bit clear to you or not? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Suppose a plant progeny has genes of a characteristics of, मैंने आपको सारा बता दिया, has a tallness, and now the genes for tallness will give instruction to the plant to make a lot of plant growth hormones. And due to the formation of excess of plant growth hormones, plant will grow too much and hence become tall. And if there is a what you call dwarfness is the dominant structure, then it will not send the instruction to make more hormones. More hormones will not make more proteins, so nothing will happen. Same in case of the hairs. Okay, I have given you this example. Now, Sia, Yes, sir. right? पूरा मुझे आपने एक्सप्लेन करना है. मैं आपको इसका ना हाइट का प्लांट का एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? मैं थोड़ा टाइप करके बताता हूँ. Parent 1 of plant progeny has dominant gene of T, and parent 2 has T. New offspring will inherit the each genes from both the parents, to form a pair of height genes, which will be TT, right? Is it okay? Now in progeny 1, हम progeny की बात कर रहे हैं. In progeny T is dominant, so it will instruct to make more hormones relating to height, which will create more proteins of height, which will lead to increase the height of the plant. This is how genes work. Is it okay to you now? Is it okay Yes, to sir. everyone? Now a progeny of human has a brown hair, whereas one parent has black and other has brown. So will you want to write it down, then you are going to tell me, or you can tell me directly? Anyone? You want to write it down first of all so that you can understand the logic. What do you want, guys? Tell me. I didn't सर get. जो फर्स्ट वाला है उसमें ये गलत नहीं हुआ है. न्यू ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट ईच जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स टू फॉर्म अ पेयर ऑफ हाइट. TT, बिग T, कैपिटल T एंड स्मॉल T. एक पेरेंट के पास कैपिटल T था, दूसरे पेरेंट्स के पास. बेटा हाइट 2 बार लिख दिया तो क्या हुआ? मीन्स दिस इज नॉट द थिंग यू शुड आस्क मी राइट नाउ कि आप इंग्लिश मेरी ग्रामर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं In the recorded class, yes. Now, A progeny has one gene from father's side, whereas second gene from mother's side.
as parent one has black hair and second parent has brown hair, whereas the progeny has brown hair. We can say that the gene of the second parent is dominant and it interacts the hormones and the progeny has brown hair. Very nice. So after that, what would happen if the pair or progeny has inherited that what you call genes from the parents? Then how will they control what the genes do? Then that you also have to write it now. I'm asking this thing. So what you are going to write it here in the progeny, dominant traits, which is we called it capital H, right? In here we use this capital H, will instruct the more hormones to get prepared for the brown hairs, which will lead to the hairs of brown hairs, led to the color of hair to brown. You got it? Yes, sir. Okay, Krish. Yes, beta. Yes. So यही बोल Yes, my dear. So the parent one of progeny, the parent one of progeny has dominant uh, gene of T, and parent two has the small t. New offspring will inherit the each gene from both the parents to form a new pair, uh, which will be TT. Now in progeny, Capital T and small t. capital T and small t. Now in progeny, if capital T is dominant, Do you so know? it will No, if ni. Do you know that capital which is dominant? You know, you question it. You can judge it. See, Sia has concluded that since the progeny has this kind of genes, therefore that genes of that parent is dominant. That is conclusive. Why you using the if then? Your marks are going to cut, beta. capital T is dominant, so it will make more hormones relating to that height, And that hormone will create the proteins regarding to that. proteins and of the, height, which will lead to increase of height of the Okay. Everyone is understood with this topic. Yes. Yes, sir. Anyone has some doubt? You want to ask something? Sure. Now we are going to study how blood groups are inherited. How blood groups are inherited. Now there are four kinds of blood group among the humans. There is 1A, 1B, 1AB and 1O. Right? These are the kind of plus भी होते हैं, positive भी होते हैं, negative होते हैं. We are not considering that right now. Now these are two. All the blood groups. Now all the, if you are writing it, what I am writing, that is going to help you a lot. All the blood groups are controlled by, right? All the blood groups are controlled by a gene. We know that there must be some genetic factor, a gene, which has three different forms. उस जीन्स की क्या है? Which has three, याद रखना, which has three different forms. What are those forms? उनको हमने सिंबल दिए हैं IA, IB and IO. Is it okay to everyone? तीन फॉर्म्स होते हैं जीन्स के अंदर. आई ए भी नहीं होता. नहीं, आई ए होता है, आई बी होता है और आई ओ होता है. ये तीन तरह के जीन्स की, एक ही जीन्स की फॉर्म है. अब ध्यान देना, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं. पॉइंट फर्स्ट, जीन ए, जीन आई ए इज डोमिनेंट
over IO. It means that gene IA is dominant and gene IO is recessive. Also, gene IB is also dominant over IO. But IA and IO cannot dominate each other. Cannot dominate each other. So they are codominant. So they are ये बात समझ आई। IA जो है O से डोमिनेंट है, IB क्या है O से डोमिनेंट है, लेकिन IA और IB सॉरी IA एंड IB कैन नॉट डोमिनेट ईच अदर, सो दे आर को डोमिनेंट। हम इनको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंट। थैंक्स वरदान, अकेला वरदान है जो क्लास में रिप्लाई कर रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू। सो अब ये को डोमिनेंट है तो इसका फैक्ट क्या मतलब हुआ ये, अब हम देखते हैं। नाउ इफ रुको, राइट, IA and IB combines, IA, right, and plus IA, it will form, सर आई बी नहीं होगा। नहीं बेटा, अगर पहले तो पहला केस है दोनों AA वाले फॉर्म हो रहे हैं, IAA, IA, so blood group will be A, blood group will be A. If IA combines with IB, IO, पहले हम O के साथ लिखते हैं, we know that it will form IA and IO, it will be blood group O, oh sorry, it will be blood group A. Getting the concept? नो सर वो ही होगा। नहीं बेटा देखो, अभी आपने क्या देखा था, IA is dominant over IO. यस सर। So A बनेगा। यस सर। Now if Yes. IA plus IB comes up, it will form IA, IB, but they both are co-dominant. Co-dominant का मतलब क्या हुआ? The blood group will be AB. Is it okay to everyone? अब हम बात, पहला वाला केस Yes, किया sir. हमने ब्लड ग्रुप A का, राइट। अब हम बात करते हैं पहला ब्लड ग्रुप B के, अगर सारे कंबाइन हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? IB plus IA, it will form Mayank. Mayank is in the class or not? No, sir. Okay, मोहन को नहीं पता होगा ये। गुरलीन, AB होगा सर। blood group is very nice, Mohan. Blood group will be AB. Now in case IB comes with combined with IO, the progeny will have genes of सर आई बी ब्लड ग्रुप। IB, IO, and it will be blood group will be O. O होगा सर ना? बी। B होगा? B Yes, होगा। B is dominant. यस सर। Please. Now, if IB, ठीक है, IB combines with IB, it will be IB, the blood group will be P, simple. P. Now let's go with the third part now. IO. When IO of one parent combines with IA of another parent, the progeny will be IO and IA. Blood group will be A. A is dominant always, right?
Yes. IO plus IB, then IO IB, B. blood group will be B. Now in case B. IO plus IO, then it will be IO O. and I. IO O. and blood group will be O. O. So there is only very rare chance that blood group will be O. So you can see that O positive blood groups बहुत कम मिलते हैं. Right? We know that? Yes. Yes, sir. ठीक है ना? यहाँ तक समझ आया? Yes. ओके ये अगर इफ यू वांट टू मेक इट कोशिश करो बिना देखे बना लो, क्योंकि एक बार बन जाएगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. फिर आई विल गो विद सम क्वेश्चंस जिससे आपका ये हम हेरिडिटरी का टॉपिक आज खत्म कर देंगे, फिर हमने एवोल्यूशन पे आना है. वी विल गो विद सम पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि उससे के बिना आप लोगों को ना प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे. ओरल है वो पार्ट सारा. Everyone is saying that this is the blood group would be the A, but this is wrong. First of all, let's look into the man blood group A. Man has a blood group. Man has a Blood group of A. blood group of A. So genocytes could be IAA or IAO, right? And women so yes, has a blood group O. O. Her genocytes will be I IO. IOO and मैं- IAO. नहीं बेटा IAO. IOO ही होगा सिर्फ, क्योंकि A अगर आ गया तो वो तो डोमिनेंट हो गया ना, राइट? उसके पास यही होंगे और IOO एक ही बनेगा, इसमें तो एक ही लिखेंगे. नाउ इफ I सी इसके अंदर क्या था, IAA था और IAO था. पॉइंट ध्यान देना, पेरेंट्स के पास क्या हो सकता था, IAA या IAO. नाउ इफ IAA combines with IOO, blood group would be IA IO, then it will be A, जो आपका हाफ पार्ट ठीक है, राइट? बट इन केस IAO combines with IOO, now there are two cases. पहले केस में मैं सारा गलत लिख रहा हूँ, इट शुड बी IA combines with IO. नाउ इसके अंदर पहला जीन्स ये एक ट्रांसफर हुआ IA और हुआ दूसरा IO, तो ब्लड ग्रुप वुड बी A, ठीक है? और अब हमने ये वाला लिया था ना इस केस में. सेकंड केस में ये था O. अगर IO और एक पेरेंट का और दूसरे पेरेंट का यहाँ पे IO कंबाइन हो गया, देन ब्लड ग्रुप वुड बी O. सो वी कैन से दैट हमें पूरा डिटेल देनी है, एंड देन वी कैन से ब्लड ग्रुप कुड बी A और O. We are not definite that which kind of blood group would the kids will have, right? You got the concept कि किस तरीके से हमने किया. So हमने खाली A को पेरेंट्स को देख के yes हम sir, ये नहीं कह सकते. अब जैसे एक पेरेंट का A है, एक पेरेंट का B है, अब ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? अब देखो A वाला में लॉजिक समझेंगे. A वाले का क्या हो सकता है, IA और IA और IO, IB दूसरे का और IB. अब अगर इनके साथ अगर हम अगर यहाँ देखते हैं तो अगर I A वाला और B के साथ हो या ये वाला B के साथ हो तो हमें पता है सर AB ग्रुप ही बनेगा, IA और IB बनेगा. लेकिन इन केस अगर ये वाले पेरेंट के पास है दोनों के, राइट, और ये कंबाइन हुए तो पहला होगा IA IB के साथ, फिर होगा IA IO के साथ. मैं इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया. अब मैं ऊपर वाले IO को IB के साथ किया और ऊपर वाले IO को नीचे वाले IO के. सो ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है. यू गॉट इट? Yes, sir. समझ आया Yes, sir. कंसेप्ट?
Yes, sir. Sure? Yes, sir. Yes. Wow. Okay, this is, remember that this is very important thing. Okay, guys. सर मैं लीव कर दूं? See? Of kid. There are two kinds of chromosomes present in the parents. Two kinds of chromosomes present in the parents of sex determination. One is capital X, which are the chromosomes of a girl child, which is a chromosome of girl child, and there is a chromosome of X and Y, which is a characteristic of boy, or we can say that male. Is it okay now? अब कोई combination करना है. Now suppose parents has this X and X. Oh sorry, a man has a chromosomes of, right? A man has a chromosomes of 2 times, which are X and Y, and lady has a chromosomes. Now if these two combines, it will form X and X. If these two combines, then it will form X and Y. If now, अब इसके साथ करते हैं X and X, and if this combine, then it is X and Y. You got it? So अगर आप देखें, so there are always, most of the time, there are 50-50 chances it could be a man or it could be a male or it could be a girl, right? Yes. So you got it. Why does the population is broadly divided into 50-50, half boys and half girls? Because whenever the chromosomes divide, no one can predict कि इनकी फैमिली में से मेल्स होते थे तो फीमेल्स नहीं हो सकती. नो, देयर इज नो चांसेस. इट इज अ 50-50 पाथ चांसेस. ये एक पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay. Yes. Now parent one has a blood group of A. Parent 2 has a blood group of B. What is the progeny? What is the blood group of progeny which is formed by this? Answer me.